व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप सभी। तो स्वागत है आपका एक और नई गेम प्ले वीडियो में। तो आज हम खेलने वाले हैं गेटिंग ओवर इट। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, हमारा जो गेम है इसमें हमारे पास एक कैरेक्टर है जो कि एक गंजा है। क्या गंजा है जो मटके में फंसा हुआ है और उस मटके में उसने मुंह भी रखा है। तो हमें जस्ट क्या करना है, इस गंजे को आसमान की सैर करानी है, ऊपर लेके जाना है। तो चलिए अपने गेम को शुरू करते हैं। लेट्स गो। तो अब हमको अच्छा इस पेड़ से ऊपर जाना है। ओके, इजी इजी गंजे, इजी आराम से। अबे गंजे पागल है क्या, इतनी ऊपर जाने के बाद? हाँ बस बस बस, आराम से इस लकड़े पे फंसाना हमको यहाँ पे। ओके ओके, आराम से। एंड गाइस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने इस गेम की बहुत ज़्यादा पहले वीडियो देख चुका हूँ, तब जाके मैं इस गेम को ट्राई कर रहा हूँ। तो अभी तक तो यार मतलब जैसे कहते हैं ना सब कि गेम बहुत ट्रोलिंग है। तो यार मुझे तो अभी तक कुछ नहीं लगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा लग रहा है। ये गंजा जा ही नहीं रहा है, यहाँ अटका रहा हूँ, ये अटक गया। देख, There's no feeling more intense than starting over. If you deleted your homework the day before it was due, as I have, or if you left your wallet at home and you have to go back after spending an hour in the commute. If you won some money at the casino and then put all your winnings on red but it came up black. If you got your best shirt dry cleaned before a wedding and then immediately dropped food on it. If you won an argument with a friend and then later discovered that they just returned to their original view. Starting over is harder than starting up. If you're not ready for that, like if you've already had a bad day, then what you're about to go through might be too much. Feel free to go away and come back. I'll be here. Alright, thanks for coming with me on this trip. I'll understand if you have to take a break at any point. Just find a safe place to stop and quit the game. And don't worry, I'll save your progress, always. Even your mistakes. This game is a homage to a free game that came out in 2002 titled Sexy Hain. The author of that game was Jazzor, a mysterious Czech designer who was known at the time as the father of B games. And B games are rough assemblages of found objects. The designers slap them together very quickly and freely, and they're often too rough and unfriendly to gain much of a following. They're built more for the joy of building them than as polished products. In a certain way, Sexy Hiking is the perfect embodiment of a B game. It's built almost entirely out of found and recycled parts, and it's one of the most unusual and unfriendly games of its time. In it, your task is simply to drag yourself up a mountain with a hammer. And that act of climbing, in the digital world or in real life, has certain essential properties that give the game its flavor. No amount of forward progress is guaranteed. Some cliffs are too sheer or too slippery, and the player is constantly, unremittingly in danger of falling and losing everything. Anyway, when you start Sexy Hiking, you're standing next to this dead tree that blocks the way to the entire rest of the game. It might take you an hour to get over that tree, and a lot of people never got past it. Prod and poke at it, exploring the limits of your reach and your strength, trying to find a way up and over. And there's a sense of truth in that lack of compromise. Most obstacles in video game worlds are fake. You can be completely confident in your ability to get through them once you have the correct method or the correct equipment or just by spending enough time. In that sense, every pixelated obstacle in Sexy Hiking is real. The obstacles in Sexy Hiking are unyielding, and that makes the game uniquely frustrating. But I'm not sure Jazzor intended to make a frustrating game. The frustration is just essential to the act of climbing, and it's authentic to the process of building a game about climbing. A funny thing happened to me as I was building this mountain. I'd have an idea for a new obstacle, and I'd build it, test it, and it would usually turn out to be unreasonably hard. But I couldn't bring myself to make it easier. It already felt like my inability to get past the new obstacle was my fault as a player rather than as a builder. Imaginary mountains build themselves from our efforts to climb them, and it's our repeated attempts to reach the summit that turns those mountains into something real. Let's go. देखो मैंने ऊपर देखा है, ऊपर हमारे लिए कुछ भी नहीं है। ऊपर हम जा ही नहीं सकते।
पिट्ठू के ऊपर कुछ आ ही नहीं। अपने नीचे नहीं, ऊपर नीचे नहीं जाना अपने को। नीचे आराम से नीचे ओके आराम से नीचे लो हैमर, नीचे और थोड़ा सा नीचे। नहीं यार टेढ़ा जा रहा तू हैमर, हल्का सा नीचे लेना। हाँ ये मार शिट यार, क्या गंजे तू क्या, तो नीचे ही चल। हाँ अब हमको जस्ट इसके ऊपर जाना है। यहाँ तू जा रहा है पागल, कहाँ जाना है क्या? यहाँ कहाँ जाऊंगा मैं, देख ना जरा, ये देख जा कहीं नहीं रहा है, बस बकचोदी करनी है इसको बस। चल यहीं चल। ओके बैठ जा। अबे यार बैठने के लिए कहा था। Oh, you just lost a lot of progress. That's a deep frustration, a real punch in the gut. ये स्टार्टिंग था यहाँ का, मुझे लग रहा था यहीं जाना था। ये स्टार्टिंग है। अबे ये क्या स्कैम है मेरे साथ? यार ये तो गंदा हो गया यार, इन्होंने निकलना है मर ही नहीं निकलना है। ये लो बच गया आराम से। यार कितने अलग मुसीबत लगाई है। वापस जाओ यहाँ से, ये देखो एक चट्टान, ये दिमाग खराब हो रहा है यार। देखा तो यार कुछ करना पड़ेगा। जोर सारे लगाने इसको, सारा करना इसको, पर करना कुछ है नहीं। क्या कर रहा है, जा भी रहा है तो नहीं। ये देखो हैमर रखूंगा कहाँ, ले कहाँ जाएगा उसको। चल तेरी माँ, बस यहीं रुक गया, तेरी डांट फोड़ दूंगा मैं बच्चे। नीचे उतर। अब चल आराम से, आराम से चलेंगे, ठीक है रंजे? लेट्स गो आराम से रंजे, कोई दिक्कत नहीं, नीचे आएंगे कोई दिक्कत नहीं। वैसे भी तूने नीचे गिरा दिया अपने को इतनी ऊपर से। ये देख Sorry about that. फिर नीचे क्यों जाना है मेरे भाई यार? बढ़िया, बहुत बढ़िया, आराम से, बहुत इजी है यार बच्चे, हार्ड नहीं है चीज, बहुत इजी है। अब हार्ड है, अब तूने हार्ड बना दिया है अपने फंस के। या तो तू नीचे चल, बहुत बढ़िया। Oh, it happened again. Keep on trying, don't let it get to you. बहुत अच्छी तरह गिरे जा रहा है, चल रहा। अब मैं सोच रहा हूँ एक तो वहाँ जहाँ रास्ता नहीं है, उधर साइड कैसे जाना पड़ेगा हमको। चल रे यार, बस भाई ये बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं तेरी डांट हो जो दूसरी बार हो चुका है, ये पकड़ लिया। इजी बस कंचे आराम से, 1 2 3 ये देख ये क्या कर रहा है गंजे, बार पकड़ अम्मा। अबे गंजे यार, ये तू सारा कर ले, पकड़ा तुझ पे जा नहीं रहा। दीवार में मत मारिए बस, नहीं। हाँ अब हमको यहाँ से बस करके नीचे मार,
नहीं इधर नहीं इधर नहीं इधर इधर ले यार गंजे नीचे मारनी बात समझ इधर नहीं मारनी मेरे भाई मुझे लग रहा था यही करेगा मुझे लग रहा था यही करेगा मुझे लग ही रहा था भाई मैंने सोच ही लिया था एक बार ऊपर चढ़ के बैठ जाए यार अबे यार गंजे मैं कह रहा हूँ अगर इस बार गिर गया मैं दूसरी बार खेलूंगा भाई मुझे कर मार मैं दूसरी बार खेलूंगा इस बार अगर तू गिर गया नीचे पहुंच गया मैं दूसरी बार नहीं खेलूंगा नहीं गंजे यार इजी है यार नहीं हार्ड तो नहीं This thing that we call failure is not the falling down, but the